क्यों ऐसी बात है ना, हम आपकी जेनरोसिटी जानते हैं सर। इंशाल्लाह बेहतर होगा सर। नहीं खैर ये बात असाइड नाउ, ये अब इसके बाद डिफेंस क्यों आता है बीच में, ये जरा दिखाइए। ये तो एग्रीमेंट हमने देख लिया, इसके बाद वाला एग्रीमेंट दिखाइए। ये स्टोरी कंटिन्यू होती है ना, बैरियर ने डिफेंस है जो किया एग्रीमेंट, वो किधर है? वो डेट ऑफ एग्रीमेंट है पेज 37 पे है। हाँ पेज 37 पे सर, इसी आपकी इंडेक्स पे। ये डीएचए की शेख साहब आपके वाले ना? नहीं सर, डीएचए की डबल की नहीं, आपने नहीं फाइल किया शेख साहब, आपने नहीं किया? मैंने दिया हुआ सर। आप अपना बताएं। मैं एक सेकंड। एक सेकंड, ये सर है अवेलेबल एट पेज 259। पार्ट 2, ये पार्ट 2। इट इज ट्राई पार्ट एग्रीमेंट सर। ये मैं एग्रीमेंट जरा मुझे समझा दें, इसका मतलब क्या है इस एग्रीमेंट का, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है। एक तो सर ये स्टैम्प पेपर पे है, ये स्टैम्प पेपर पे है सर। अच्छा, किसने खरीदा स्टैम्प पेपर? ये बैक साइड खामोशी कभी बेहतर होती है सर वो ठीक है, गॉट इट सर। अब आपने निशानदेही कर दी, किसी ने नहीं खरीदा, चलें कोई बात नहीं। वो सर वो बैक साइड जरा फोटो कॉपी में नहीं आई, लेकिन अच्छा ये बीच में ये पेट्रो ट्रेड क्यों आ गए? सर इसमें असल ये था कि ये ट्राई पार्ट एग्रीमेंट था, इसमें जो रेवेन्यू सोसाइटी की लैंड थी उसके अलावा भी काफी लैंड प्रोवाइड कर रहे थे पेट्रो वाले पहले, फिर ये ट्राई पार्ट एग्रीमेंट आप सीधा साधा डीएचए से करते, ये पेट्रो ट्रेड क्यों आ गया बीच में? पेट्रो ट्रेड ऑलरेडी एग्रीमेंट था विद डीएचए टू प्रोवाइड लैंड, टू प्रोक्योर लैंड फॉर देम। उसमें से इसमें से 3407 का ये एग्रीमेंट हुआ, जिसमें से 2833 कनाल थी सिर्फ सोसाइटी की, बाकी 575 कनाल थी मौजूद। आपने मिक्सअप क्यों किया देखिए? आपने एक सेकेंड जरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बात सर। ये एक सोसाइटी है जो जिसके पास पैसे नहीं थी, जो चौपट हो गई, ठीक है। अब कैसे हुआ? उसने कहा कि जी बैरिया टाउन का इंतखाब किया उन्होंने। जी सर। जब वो बैरिया टाउन का इंतखाब कर पाए तो अब आप आगे वो जमीन किसी और को कैसे मुंतकिल कर रहे हैं? सर ये एज एजेंट ऑफ डीएचए एंटर हुए। अगर फर्स्ट पैराग्राफ अगर पढ़ लें जनाब। जी बताइए। माय लॉर्ड, वेयर एज पेट्रो ट्रेड इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी incorporated under Companies Ordinance 1984, engaged in a real estate business and is working as an agent for DHA Islamabad to provide land to DHA Islamabad for its housing projects through sale, purchase, exchange, etc. from the respective landowners, for which a written contract has been signed between DHA Islamabad and Petro Trade, which shall be read as an integral part of ये एग्रीमेंट कहाँ दिखाइए? ये हमारे पास नहीं है, ये डीएचए के पास दिखाइए। सर इसके साथ तो नहीं हमने लगाया। छुपा रहे हैं ना? नहीं सर, वो लगा देता हूँ। नहीं क्यों लगाएंगे? 2 महीने आपको दिए थे लगाने के लिए। सर जो रेलेवेंट यही था ना, आपने इस एग्रीमेंट में इसका तस्करा है। सर जो आप ये क्यों छुपा रहे हैं? नहीं सर, ये ट्रेड ऑफ एग्रीमेंट रेलेवेंट था, वो लगाया मैंने। आपने फैसला करना है, हमने करना है? सर वो हमने आपको हुक्म दिया था जी, तब ये फाइल करें चीजें, तो ये आपने छुपाया है। नहीं सर मैं लगा देता हूँ। हम ठीक है, ये आपने छुपाया है। नहीं सर ये लगा देता हूँ मैं, भाई लगा देता हूँ मैं। बड़ी अच्छी बात है। जी सर। किधर कौन आया डीएचए की तरफ से? सर मैं डीएचए की तरफ से सर मैं ही। भाई उनका मुलाजिम कौन आया है? मुलाजिम कोई नहीं आया, मैं आप कौन है फिर? मैं सर उनका काउंसिल हूँ। जी तो ये तो आप ये खुफिया एग्रीमेंट है, हमें पता ही नहीं इसके बारे में, तो उसकी बात क्या करें?
अच्छा दूसरा एंड वेरेस पढ़िए। Integrated part of अच्छा आगे पढ़िए ना, for उसको छोड़ transaction दीजिए। made by DHA Islamabad. भाई आगे पढ़िए ना। All three parties. एंड वेरेस दूसरा सर, and whereas Messrs. Barrier Town Private Limited is a private limited company incorporated under Companies Ordinance 1984, engaged in the business of development and establishment of various housing scheme projects, and for the said purposes has purchased and is a lawful owner in possession of thousands of canals of land in different revenue estates of Tehsil and District of Rawalpindi and Islamabad. Mr. Malik Riaz Hussain, the chief executive of the company, is fully empowered and authorized to sign and execute this agreement on behalf of the company-wide resolution dated 23rd August 2007, passed by the board of directors in favor of Malik Riaz Hussain. And whereas DHA Islamabad has been established under ordinance such and such of 2005 and re-promulgated from time to time, being represented by its administrator Brigadier Iftikhar Ali Khan, who is fully authorized to enter into the sale agreement by virtue of aforesaid ordinance. Whereas ये एक सेट है ना, कई सवाल उठ जाते हैं ना। Thousands of canals, कोई तफसील नहीं है। दूसरी बात, आप हैं, आपका रोल है आमीन के तौर पे, आप अमानत है आपके पास, आप अपनी अमानत आगे कैसे दे रहे हैं। तीसरी बात, Ordinance 2 of 2005 which has been re-promulgated from time to time, is this legal? Re-promulgation of ordinances? सर उस वक्त तो हो रही थी। आपसे नहीं पूछ रहे ना, इनसे पूछ। Re-promulgation of ordinances। सर ये तो DHA से रिलेटेड है क्योंकि उनका ऑर्डिनेंस है। कानूनी सवाल पूछ रहे हैं। Re-promulgation of ordinances, is it allowed? ऐसा नहीं, अगर असेंबली फंक्शनल है तो फिर भाई री-promulgation फैसले हैं, ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता। तो री-promulgation of ordinance अभी तक ये promulgation पे चल रहा है या एक्ट बन गया? नहीं, एक्ट बन गया। कब बना? एक्ट बन गया 2013 में। तो ये भी तकरीबन ये भी डाइसी एग्जिस्टेंस थी उस वक्त। चलें आगे बढ़ें। Sir, and whereas the company is a lawful owner in possession of land free from all encumbrances whatsoever, making approximately 3,407 canals. You are not a lawful owner. Absolutely wrong. You have been given this land for onward distributing to the allottees. Sir. You are not the lawful owners. पता नहीं कहाँ से आप बन गए lawful owner इसके। सर वो कर दी थी हमने, जी सर दिए थे उनको, प्लॉट्स दे दिए थे, जो कि मर्जर एग्रीमेंट है उसमें ये मेंशन है, ये सारी चीजें। देखिए ना, दुनिया देख रही है सर, मगर ये चीजें नहीं नजर आएंगी ना। स्टैम्प ड्यूटी जो कलेक्ट करता है, ना रजिस्ट्रार को, ना FBR को, वो आंखें उनकी बंद होती हैं ऐसे मामलों में। एट द टाइम ऑफ म्यूटेशन सर वो सारी फीस पे होती हैं। जो हमारी फेवर में म्यूटेशन आए हमने पे किए, जो इनकी फेवर में म्यूटेशन थे वो उन्होंने पे किए। वो तो सर सारी जो स्कीम ऑफ म्यूटेशन की जो बात करेंगे ना, वो एक और इलीगैलिटी आपने कर दी। ये एग्रीकल्चर लैंड है, आप एग्रीकल्चर प्लॉट दे रहे हो, मतलब कितने कानून पाकिस्तान के तोड़ेंगे आप। आपने बात कर दी ना म्यूटेशन कैसे हो रहा है बताएं। हाउसिंग स्कीम्स म्यूटेशन कैसे पे चल रही है, ये मुझे बता दीजिए आप। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत हो रही है। लैंड रेवेन्यू एक्ट मेरी समझ के मुताबिक एग्रीकल्चर लैंड को डील करता है। उस वक्त सर कंस्ट्रक्शन नहीं थी सर। ऑरल सेल को रेफर करके माशाल्लाह जो जवाब मिल रहे हैं ना वो भी नया भी आज है। क्या बात हो रही है? कंस्ट्रक्शन नहीं थी सर उस वक्त। ये तो आप कह रहे हैं ना मैं इस पे प्लॉट्स डेवलप करूंगा सर, क्योंकि खसरा नंबर वाली प्रॉपर्टी थी और उस वक्त कंस्ट्रक्शन नहीं थी। अब जो उसके बाद जो हो रही है सर, वो सारी रजिस्टर्ड से लीड हो रही है। तो मतलब आपने वो भी आपने बचा ली? नहीं सर, वो हमने पेमेंट कर दी सारी सर। एग्रीकल्चर लैंड, आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, वेयर इज द परमिशन टू कन्वर्ट लैंड यूज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल टू अर्बन यूज, वेयर इज दैट नोटिफिकेशन? ये तो आपकी पूरी सोसाइटी इलीगल है। दिखा दें हमें कोई नोटिफिकेशन भाई, क्योंकि डेजिग्नेटेड एग्रीकल्चर लैंड है। अब इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना टू अ डिफरेंट लैंड यूज, टू कमर्शियल, टू अर्बन। दिखाइए नोटिफिकेशन, दिखाइए जो चार्जेस आपने दिए कन्वर्जन चार्जेस, वो कहाँ हैं? इस प्रॉपर्टी पे जो DHA को दी, फिर DHA ने इसको रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो दे दिया, उस पे कंस्ट्रक्शन हुई, तो वो
इनको ये अब इनके पास हो सकता है कि कोई अगर इन्होंने आप परमिशन दोनों साथ खड़े हो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? बात कर लो, आपके साथ एग्रीमेंट है इनका, बताते नहीं आपको? नहीं सर, हमारे लिए तो प्लॉट आपके लिए तो कानून पाकिस्तान का लागू ही नहीं होता है ना। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हमने तो प्लॉट्स के लिए लिया था और लिखा भी यही हुआ है कि इसको कभी वो कन्वर्शन दिखाए ना, ये आपको बेच रहे लैंड नॉट फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ये आपको बेच रहे हैं फॉर हाउसिंग कमर्शियल यूज। ये थी Where is the notification? Where is the payment of charges that you paid for land conversion use? Land was acquired for the housing purposes sir, जो हमें मिली, जो इन्होंने मर्ज की। पाकिस्तान जो खुद कफील था ना खुराक में, अब नहीं रहेगा, क्योंकि आप हर जगह हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं सोसाइटी ने एंड टोटली इलीगली। अर्बन लैंड इज बीइंग कन्वर्टेड टू कमर्शियल एंड अर्बन यूज। हाउ? सोसाइटी ने RDA को अप्लाई किया हुआ था सारा लेआउट प्लान। इनफैक्ट जरा मुझे दिखाएं, पंजाब प्राइवेट हाउसिंग रूल्स हैं उनके मुताबिक इन्होंने 2005 में आए। बना लीजिए एक और रूल्स, जाके शाम को छाप दीजिएगा। सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सर पास किया। आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस सब्जेक्ट टू NOC फ्रॉम द RDA, उसके रूल्स हैं बाकायदा। अच्छा, हाँ जी, पंजाब प्राइवेट हाउसिंग रूल्स 2005 थे, उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2010 में आए। दिखाएं, पढ़ें, एक्ट बताइए कौन सा है? पंजाब हाउसिंग प्राइवेट रूल्स हैं। मतलब इसमें आपको कोई लिस्ट बताएं कितने कानून आपने खिलाफ वर्जियां की हैं आप लोगों ने? सर हमने खत्म नहीं होगी लिस्ट। जी, can you use agricultural land for without going through the conversion process? No, my lord. What are the rules they are saying? Which rules? My lord, वो तो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनी है, लाइक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो No, but how can Bahria, DHA go and capture agriculture land, convert it itself cannot. into residential, commercial land? How can they do that? They cannot, my lord. They have to go through a conversion process. Yes, if my lord. Yes. the law allows it. Yes, my lord. If they pay the conversion charges. Because ये तो बहुत महंगे होते हैं, कराची में तो दे रहे हैं। आप ठहर जाइए ना My lord, initially there is a master plan of every city. नहीं, सिटी की बात नहीं है ना, तो सिटीज तो ये तो उसमें चलेगा, और रूरल एरियाज में। उसमें फिर ब्राउन और ग्रीन एरियाज हैं। The green areas cannot be even allowed to be converted for the brown areas for development of societies or for residential purposes. The green will remain green. वो कन्वर्जन का पूरे रूल्स हैं, उसमें अप्लाई करना होता है, फीस डिपॉजिट होती है, उसके बाद इजाजत होती है। अब एग्रीकल्चर तो कोई करना नहीं चाहता पाकिस्तान में, सब एक हाउसिंग स्कीम बनाना चाहता है, सारी खाली पड़ी हुई हैं। जहां पे एग्रीकल्चर है भी माय लॉर्ड, वहां पे भी द हाउसिंग स्कीम्स, the influential people of housing scheme, they just intervened and they take over the lands. So where is the government? My lord, हम तो जो where is the government? जो करना चाह रहे हैं, agriculture land is a very valuable resource of the people and the state. My lord, हम तो जो कर रहे हैं अभी तो आप जाओ, पूरा पाकिस्तान एक वो बन गया है, urban sprawl. Restrictive. Who's going to feed the population which is growing? इसीलिए माय लॉर्ड वो ब्राउन और ग्रीन की अब क्लासिफिकेशन कर रही है। वी आर रिलीजियसली फॉलोइंग दैट। हम कोई ग्रीन ब्राउन में कन्वर्ट होने नहीं दे रहे, बल्कि गवर्नमेंट ने चैलेंज किया हुआ है एक कन्वर्जन, एक शहर का वो मास्टर प्लान में जो चेंज है। नहीं, but look at these big landlords, DHA, Bahria Town, Petrograde, क्या है? Petrograde. इनको कोई पूछ नहीं सकता है। That is before you lordships. Above the law. Or they make the law. Meeting, look at this. Where do we begin even? ये सब जो कन्वर्जन फीस के चार्जेस लगाए ना इन्होंने 2019 में रूल्स फर्स्ट टाइम बनाए हैं इन्होंने। ग्रीन और एग्रीकल्चर की कन्वर्जन के रूल्स जो बनाए हैं। मुझे ये सिर्फ बता दें, लैंड रेवेन्यू एक्ट किसको लगता है? पर एग्रीकल्चर लैंड को लगता है। लैंड रेवेन्यू तहत म्यूटेशन होती है, कौन सी जमीन होती है? बिल्कुल आपकी बात सही है। तो फिर एग्रीकल्चर दूसरा कानून है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, वो अलग आ जाता है। आप एग्रीकल्चर लैंड को आप वो कैसे कर सकते हो कमर्शियल और अर्बन में कन्वर्ट? देयर इज अ प्रोसेस, इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। एडवर्टाइज करना होता है, ऑब्जेक्शन रेज करना होता है, ये करना होता है।
बंजर लैंड है वो भी गवर्नमेंट तो उसी लॉ के तहत होती है। Where is the conversion by DHA? हमें रिकॉर्ड दिखाइए कि आपने अप्लाई किया है, या तो ये आपको कहेंगे जी हम बैरिया टाउन वाले कहें जी हम ये कन्वर्ट करके लाएं। जी सर ये सुन लीजिए ना सर कि ये देखें ये हमने कन्वर्ट करवा ली है फॉर कमर्शियल रेजिडेंशियल यूज, फिर आपने खरीद ली, फिर तो आपकी खत्म है जिम्मेदारी। ये आपने खरीद ली एग्रीकल्चर लैंड तो आप दिखाइए सर आपने कैसे कन्वर्ट किया है। सर हमने एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी, इनका मर्जर हुआ एक हाउसिंग सोसाइटी का, वो सोसाइटी की ज़मीन इन्होंने हमें दी, तो उसके लिए इन्होंने अपने पास टाइटल रखा और जो कि क्लियर था एट द रेलेवेंट टाइम, वो हमने चेक किया। बाकी अगर आपने जो सारी या तो आप अग्रीमेंट उस हद तक रखते तो अलग था, आपने इसको मिक्सअप कर दिया कि तुम जो ये क्या नाम है पेट्रो ट्रेड, तुम जो हमारे लिए जमीनें लाओगे, ठीक है, अब आपने उनको अपने चीज को कंटेमिनेट कर दिया इन द रेवेन्यू स्टेट्स ऑफ मुर्गा जराही पता नहीं कहाँ आपने खुद ही खराब कर दिया सारा कुछ। सर वो इसी मौजे में थी ये जो हाउसिंग सोसाइटी थी। My lord, एक स्टांस ये है कि ये हाउसिंग सोसाइटी वाज नाइदर हियर नॉर देयर, एंड इन द सेम ब्रेथ द अदर स्टांस इज कि वो हाउसिंग सोसाइटी थी, उसका प्लान भी अप्रूव हुआ था। अप्रूव नहीं, so then they should have restricted it to that. Where does petro trade come into the picture? They should have said okay fine, then why did the government not directly deal with DHA? Under the cooperative मिडिलमैन क्यों बनाया बैरिया को? भाई अगर इन्हीं को देना था जमीन डायरेक्ट इनसे कर लेते तो सौदा, कम से कम लोगों की बचत होती, कम से कम DHA वगैरह में ये हेरा फेरी तो नहीं होती है, या होती है वहां भी? नहीं सर बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती है। तो आपसे डायरेक्ट डील कर लेते, आप ले लेते इनसे जमीन, ये बीच में इनके जरिए क्यों आए आपके पास? he is land provider to DHA. पता नहीं क्या चीजें बना रहे हैं, ना किसी चीज का सर है ना किसी चीज का पैर है। बेसिकली सर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट के मुताबिक उसको उन्होंने रजिस्टर्ड किया। हम किसी लॉ स्टूडेंट को दें ये असाइनमेंट, जस्ट पॉइंट आउट ऑल द लॉज दैट हैव बीन वायलेटेड, तो अच्छी खासी एक थीसिस बन जाएगी उस पे। हम होते केसेस देखते हैं कि एक दो कानून कभी कभी हो जाती है उसकी कोई शिक, तो पूरे कानून आपने है ही नहीं, परवाह नहीं। वो चीफ मिनिस्टर बादशाह, वो फना बादशाह, लेकिन सर हम बादशाहत है। हम तक तो सर इन्हीं के नाम पे म्यूटेट थी जो हमने। अब आप म्यूटेट से निकलो ना बात को, थोड़ा आप जरा ज़हन खोल लेना। ठीक है बस सर उन पे वो ऑरल आप पूरे पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं सर। ट्रांसफर नहीं, आप क्यों पाकिस्तान को तबाह कर रहे हो? आप खाओगे कि लोग खाएंगे क्या? पैसे की हवस प्राइवेट लोगों में तो समझ आता है, मगर जब आप लोग कर रहे हो तो समझ नहीं आता है। पर इस पे वैसे कोई एग्रीकल्चर हो नहीं रही थी, एग्रीकल्चर तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये जो लैंड उस पे कोई एग्रीकल्चर नहीं था सर जी। जो लैंड ये ली है DHA ने, उस पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कोई भी नहीं थी सर। आपने आज का अखबार पढ़ा हो शायद, सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इस चीज में माहिर है। ये भी मुझे इतराफ करने में कोई शर्म नहीं है कि हमारा इंस्टीट्यूशन की भी कोई अच्छी साख नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड वाइड। कोशिश कर रहे हैं बेहतर करें, मगर आप लोग तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो उसी पे चल रहे हैं, उसी राह पे। पूरे पाकिस्तान को एक हाउसिंग सोसाइटी बना दो, ना पेट्रोल है पाकिस्तान में, ना गेहूं है, ना चावल रहेगा, सब कुछ इंपोर्ट कर दो बस। दिस इज द प्लानिंग एंड लुक एट दिस पावरफुल पीपल। I don't know, it's a trade off agreement, अजीब अजीब चीजें। 3,400 कैनाल पे 1 रुपया टैक्स नहीं दिया आपने, 1 रुपया नहीं दिया आपने, बना दिया सर। वो ट्रांसफर के ऊपर सर कानून टैक्स के लागू नहीं होते हैं DHA पे? नहीं सर, वो आपके ऑडिट होते हैं अकाउंट्स? जी सर हमारे वो भी एग्जामिशन ले लिया आपने? नहीं सर हमारा इंटरनल ऑडिट हम करते हैं। इंटरनल का नहीं पूछ रहा हूँ, सरकारी ऑडिट होता है आपका या नहीं? नहीं सर हमारे एक्ट में है कि हम खुद ऑडिट जो है वो करते हैं सरकारी। क्यों करें आप? यू ओन एवरीथिंग।
सर हमने कोई टैक्स कोई ऐसी चीज नहीं है डीएचए में। क्या ऐसी चीज नहीं है? डीएचए पूरे टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट। दिखा दें, आप हमें दिखा दें, कोई स्टैम्प ड्यूटी दी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए, हर चीज किधर है? इस पे तो कुछ नहीं है। 3400 कनाल आपने खरीद ली जमीन। जी सर। 1 रुपया नहीं दिया सरकार को। जी सर, वो एट द टाइम ऑफ म्यूटेशन वो दिए सर। अच्छा, वो क्यों जहमत की? वहां भी एक कानून लिख देते डीएचए इज एग्जेम्प्टेड। नहीं सर, वो परवेज मुशर्रफ साहब थे, सरदर लिखवा लेते, एक ऑर्डिनेंस पास करवा देते एक और, ये जहमत भी ना करते। लॉ सर, वो जो एज पर लॉ कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। क्या खूबसूरत बातें करनी। I don't know what to do with this. My lord, I seek your lordship. We are at a stage where everything has happened. My lord, courts have got involved even without questioning any of these things. My lord, I seek your lordship's permission. चूंकि pending था, आपने notice किए हुए थे on questions. My cooperative department wanted to advertise to the general public that all those members who were members of this society, if they are still affected or not compensated, not taken care of, they can come forward and file their claim within 30 days before the registrar cooperative. Because ये कह रहे हैं, अभी तक मेरे पास कोई record नहीं है कि इन्होंने कितने लोगों को वाकई compensate किया है। कोई अलॉटमेंट लेटर्स नहीं है। दे मस्ट हैव किया होगा, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग देम, बट आई सीक योर लॉर्डशिप्स परमिशन टू एडवर्टाइज दिस। Why do you need our permission? माय लॉर्ड, कोर्ट में पेंडिंग था, तो मैंने रजिस्ट्रार को कहा, तो मेरी बात हुई, मैंने कहा जी मैं अगली तारीख पे इस पे मैं आई एडवाइज्ड हिम टू एडवर्टाइज दिस। No, you do whatever. प्रोप्राइटी डिमांड्स के हम सारे मेंबर्स के लिए एक लार्ज पब्लिक लार्जली if they are not cooperating with you, you do whatever you want. माय लॉर्ड, वी विल डू इट नाउ। नहीं, if they are not cooperating, मैंने सारी लिस्ट लगाई है, नामों के साथ लगाई है, उनके अलॉटमेंट नंबर। हमें ना बताएं, हम तो नहीं, इनको बताएं। एडवर्टाइज हो जाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दे आर सेटिस्फाइड, दे आर सेटिस्फाइड। बेशक कर ले, बेशक कर ले। नहीं, हमें आपको हमारी परमिशन की जरूरत है। लिस्ट हमने इनको दे दी है, अभी भी लिस्ट है। आप डायरेक्ट इनसे बात करें। ये तो कह रहे दे आर नाउ exasperated and say कि you're not providing assistance, that's why they want to do that. पेज 138 पे मैंने लिस्ट है ना जी, नहीं उसके साथ सारी स्पोर्टिंग लगाई है, आगे बाय नेम लगाया कि किसको कौन सा प्लॉट नंबर दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया, हर चीज तफसील के साथ लगाई है। लिस्ट है ना जी। ट्रांसफर लेटर्स किधर है? ट्रांसफर लेटर्स कहेंगे तो वो भी प्रोवाइड कर नहीं चाहिए, हमें एक कागज नहीं चाहिए, इनको चाहिए। ये मांगे हमसे, हम देंगे। मांगा मेरे डिपार्टमेंट ने जी, नहीं जवाब मिला नहीं है कोई। डिपार्टमेंट ने कभी कोई चीज नहीं मांगी, वो मांगते हैं हम देने की तैयार है। अब हम एडवर्टाइज करेंगे जी। अब So what is the way forward, Advocate General? My lord, the way forward is, as an officer of the court, the people who have violated the law with impunity must be held accountable personally. That matter is not before us. If you want to hold them accountable, go ahead and do it. My lord, who's stopping you? Learned single judge ने तो लिखा था, बाद में वो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का उसमें इंजंक्टिव ऑर्डर आ गया कि this matter be referred to the anti-corruption. Do whatever you want to do. I don't know. You are in government. You can do whatever you want to. What do you want with this litigation? My lord, अभी के लिए we will advertise that if there are any other effectees. नहीं, अभी तो हमारे सामने ये लोग हैं. They are prepared to meet each other. My lord, दूसरों के लिए मुझे जी वो जो नहीं है वो हमारे सामने तो नहीं है ना. वो आप जाने, ये जाने, या लोग जाने, वो आपके पास आएंगे। जी हमारे पास आएंगे। We will advertise and we will give them 30 days time to file their claims with the registrar cooperative. पहले आप इनसे देख तो लें, ये कह रहे हमने रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हैं। जी my lord, पहले नहीं दे रहे थे, अब देने के लिए रिकॉर्ड दे भी दें तो फिर भी एडवर्टाइज होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। But have we stopped you from advertising? नहीं my lord, मैं for the propriety sake I wanted as long as you don't mention Supreme Court, my lord, don't use our name for any of the purposes. That will not be, my lord. You want to do anything, you do anything you want to do, my lord. We are only concerned with the litigation before us. Now all these matters sound very strange that have come up before us, which should not be. Everybody has violated the law, it seems. My lord. But at the end of the day, people are holding on to pieces of paper or land or have made houses. We don't want them to suffer. That's not what we want to do. So at the end of the day, they're not bothered. आप उनकी जमीनें ले लो या वापस कर लो, क्या होगा? सफर तो वो करेगा ना जिसे पैसे दिए. So we have to. That's why I'm asking you, what is the way forward? My lord, जो affected members हैं वो ये तो compensate हो जाएं. तो this is we are in लिस्ट दी है, 60 लोग हैं, उसकी लिस्ट दी है जिनको जो अभी तक राब्ता हमसे नहीं किया. ये 4-5 जो मौजूद है इनके साथ हम कर रहे हैं.
बाकियों का हमने भी इश्तिहार दिए हैं, हमने पर्सनल नोटिस भी दिए हैं और कमेटी ने भी नोटिस दे दें, ये भी नोटिस दे दें, बुला लें, हम उनको कंपनसेट ऑलरेडी भी किया, अब भी करेंगे। ये तो कह रहे हैं हम भी देना चाहते हैं, आप भी देना चाहते हो, तो आप दोनों एक ही पेज पे, फर्क तो नहीं है ना? तो फिर इनको कोऑपरेट करें, शायद इनके रिकॉर्ड में कोई और एड्रेस हो उनका आदमी का, ठीक है, कोई आदमी शायद हो सकता है। सर वी आर रेडी। बल्कि सर टू शो गुड जेस्चर 60 बंदे जो नहीं आए उनकी पेमेंट हमने आपका गुड जेस्चर नेक्स्ट डेट पे देखेंगे। नहीं आप उसको सर इंशाल्लाह आपको गिला आप रिजर्व में रखें अपना गुड जेस्चर, लेकिन ये अर्ज एंड ही विल कम एंड से दैट मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड। ही विल डेफिनेटली विल से एक पिटिशनर का नाम इन्होंने उस 60 लिस्ट की लिस्ट में भी नहीं लिखा जिसको कॉम्पनसेट नहीं किया हुआ, तो वो लिस्ट भी वो तो पैसे जमा कराए हुए हैं, आप पिटिशनर थे बिफोर द हाई कोर्ट। चले अभी हाई कोर्ट में पैसे जमा कराएं, तो व्हाट वी डू इज व्हाट वी कंसीडर इट एज पार्ट हर्ड एंड एडजर्न इट, और क्या करें, क्योंकि आप ये पार्ट हर्ड भी नहीं करने की, क्या करें आप इनको एक मौका दे दें सर, लेकिन अगले हफ्ते इसको तो आप लोग कितने दिन में मीटिंग कर लोगे सर? बेशक नहीं आप बताएं, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, आप बताओ जो आप कहें। 2 दिन में भी हो सकती है भाई, लेट्स बी रीजनेबल ना। चलें सर अपना 26 नहीं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो आप बताओ सर। 15 दिन का तो क्यों सर? ईद से पहले, ईद के बाद सर, ईद के बाद हो जाए तो ज्यादा बेहतर। आप मीटिंग्स पहले करें, हम केस बाद में लगा देंगे ईद के बाद। ठीक है सर, ठीक है, आप लोग अपनी कर लें मीटिंग, तो जरा आपको भी आराम से करना होगा ना, कि कह रहे हैं कुछ और लोग भी हैं वगैरह वगैरह। जी सर, ठीक है, तो जैसे आप हैंडल करना चाहें, वी विल केस विल बी फिक्स आफ्टर ईद। ठीक है, ठीक है सर। इसमें लिखें शेख सर, Learned Council for the different parties took us through the, pursuant to the last order, नहीं इसमें दोबारा लिख लें, in order dated 16 January 2024, certain facts were noted and eight questions were raised and the Registrar Cooperative Societies, DHA Rawalpindi, Bahria Town and the Government of Punjab were directed to file their respective replies. Registrar Cooperative Societies has filed CMA number 2181/2024. DHA Rawalpindi has filed 2200 sir. 2200 2024. Bahria Town has filed 2182 and 2183 and 2183 of 2024, and the Government of Punjab has filed. वो ज्वाइंट है, ज्वाइंट कंसाइज स्टेटमेंट है, वो जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब का ज्वाइंट है। अच्छा, मालूम, उसमें लिख दें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैव फाइल्ड। ठीक है, during the hearing a number of other questions have also arisen, that is whether agriculture, whether agriculture land can be converted to residential / commercial, can be used for residential / commercial purposes without it question कर दें। What other question had arisen? Proprietary of agreements. Proprietary of agreements. बाद में आ जाएगा।
सर एग्जेम्पशन जो ली थी गवर्नमेंट से एग्जेम्पशन ली थी एमर्जेंसी के लिए उसकी पावर सील की वो तो फिर फैसले में आते वाली बात है ना। फुल स्टॉप। It is the DHA Rawalpindi and Barrier, as per the contention of DHA Rawalpindi and Barrier Town had sold, can I transferred, क्या लफ्ज लिखें? Allotted. Transferred. Had statedly transferred the land that it had acquired of the society to DHA Rawalpindi by entering into a tripartite agreement with DHA पेट्रो ट्रेड। वो agreement कहाँ है आपका पेज? 259 कौन सी CMA में? ये 2182 पेज 259 सेकंड पार्ट। ये एग्रीमेंट किधर है DHA? ये सर 2182 अगर लेना सर तो उसके पेज 259 पे है। 259 यस मैम। CMA number 2 entered into a trade off agreement, TRADEOFF agreement on 29 August 2007 with Petro Trade within bracket PVT, a subsidiary of Habib Rafiq within bracket PVT Limited, through its Chief Executive Mr. Zaid Rafiq. Barrier Town Private Limited through its Chief Executive Mr. Malik Riaz Hussain and Defence Housing Authority Islamabad through its Administrator Iftikhar Ali Khan. We are informed that earlier an agreement was entered into between Barrier Town Private Limited and Colonel within bracket retired Abdullah Siddiq SIDDIQUE, Administrator, Revenue Employees Cooperative Housing Society Rawalpindi on 17 February 2005, and that the land of the society was transferred to DHA. Land of society was transferred to Barrier Town, which in turn transferred it to DHA through the agreement dated 29 August 2007. The nature of such purported agreements require much to be desired. Full stop. Learned Advocate General Punjab has stated that the administrator of the society, the term of the administrator of the society had expired, My lord. and he was not authorized to enter into an agreement. He further states that the Chief Minister, the then Chief Minister Punjab, namely Mr. Parvez Elahi, did not have the authority to
टू नोटिफिकेशन क्या है, वो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? Grant exemption. To exempt the application of the Cooperative Societies Act 1925 whole scale करना है, whole scale. And that the minister, कौन सा मिनिस्टर थे? Minister for Cooperative. Minister of Cooperatives had in writing opposed the same. Nonetheless, it went through. Full stop. The agreement between Barrier Town and the society is on the letterhead of Barrier Town. And had provided that the members of the society have to be attended to within a period of 5 years. However, well before the expiry of the said 5-year period, the trade-off agreement was executed. The trade-off agreement, we are finding difficulty to understand the trade-off agreement and what did DHA get pursuant to that, and what did each of the parties get pursuant to that? Let the said parties file concise statement attending to this query with a site plan showing the land with Google map, with attached Google map, where the respective areas should be marked. Full stop. The petitioners before us state that they will be that the grievance that Learned Council representing Barrier Town state that the grievances, that if an opportunity is granted, the grievances of the petitioners and others will be, an effort will be made to resolve the same. ठीक है, ये कुछ और लिखे हैं, जितना लिख दिया हमने, कुछ वजाहत नहीं की है। बहुत ज्यादा लिख दिया। ठीक है, बहुत ठीक लिखा। कुछ और लिखवाएं फिर दिखा। नहीं सर, काफी हो गए। आपका ग्रेस का लिख दूं या बिना लिखवा गीता ऊपर लिखेंगे? सर शो करेंगे फिर इंशाल्लाह सर। अच्छा, फुल स्टॉप। उसकी जरूरत नहीं है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू। माय लॉर्ड। ठीक है। There are different dimensions to this case. One is those who had invested and did not get anything. Those who invested and got a piece of land on which they may have utilized themselves or sold onwards, and those who did not, and the general legality. Refunded back the sorry to say. Land or refunded. Refunded. ठीक है. Thank you, sir. So, these matters will be attended to. These matters, ठीक है, बस अभी हम we are not going to say anything more. तो आप जरा उसमें कंसाइज स्टेटमेंट जरा एक और फाइल कर दें
आपसे कह रहे हैं बैरिया एंड DHA सर इसमें और वो हमारी क्वेरी एक तो कन्वर्जन पे बताइएगा दैट क्वेरी यू हैव टू अटेंड टू एज वेल on I mean agricultural land can I open a building society on it or not I'll file a concise statement जाओ तो housing scheme is housing scheme नजर आ My lord, I'll file a concise ठीक है so which they can try to understand this now you travel anywhere by road don't use the planes you will see there's a network of societies all over the place which means that naturally agricultural land is not as valuable as residential or commercial land. So everybody wants to make a housing scheme or society or whatever you want to call it. So they will naturally be enriching themselves. But it's a job of the state to ensure food security. They want money. You have to feed the population. So you have to ensure, no, I will not allow conversion of this land. This is agricultural land, no conversion taking place. This is your job. This is not our job, but we will highlight it. Their job is, they only want to make money. Fine, they will sell anything. So, but there must be some check on them. Now, if all the lands get converted to housing, which are, most of it is just investment purposes and not being used. अब कर लें DHA में अभी report मंगवा लेते हैं कितने ऑक्यूपाइड हैं कितने खाली पड़े हैं सालों साल पड़े रहेंगे खाली वो इन्वेस्टमेंट होती है बस पड़ी रहेगी My lord, my concise statement will address this. और जो नहीं अब तक काम हुए वो will come up. वो तो एक अलग बात होती है ना और with the consequence होता है कि जो actual people who need house, it becomes unaffordable. Yes. So that is another societal aspect. These are policy matters which the government has to think about, not the courts. But if the government is not considering them at all, we will make sure that you start thinking about them. So there's an element of food security, there's an element of pollution. The more urban sprawl, the environmental degradation of the environment takes place, soil erosion takes place, water scarcity issues develop, water is being transferred from urban to from agriculture to urban use. All these things are compounded. So there to be a clear vision, I mean, on this thing, not this one comment. Parks is society here, another one puts it there. This is. This will be reflected, my lord. So ये जरा आप हमें my lord, कुछ इस पे जरा आपको जरा think which I'm sure you know the issues. This will be done, my lord. The concise statement will be speaking for it. Self, my lord. No, this is not simple, it's very complicated. My lord, when the intent is right, the things can be done. No, but we must keep in mind the future also. बिल्कुल आप बताएंगे. Pakistan used to export, now we import wheat. Is that so?
My lord, यूक्रेन से नहीं आई क्योंकि वहाँ जंग हो रही थी तो हमें प्राइसेस नहीं है तो ये नहीं है. So we were एग्रीकल्चरल कंट्री थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो भी जा रही है. I don't know what's. So these are all things. I mean, rivers are being polluted, soil, water scarcity, all these things are interlinked. And what is the societies? Just investment purposes, just lying empty, most of them. They're not occupied. And do you even want to do that? And the genuine builders of the dwelling houses are being exploited, my lord, because your lordship has just mentioned, वो price hike इतनी हो जाती है कि वो affordability नहीं रहती उनकी. Maybe because the powerful builders' voice is heard in the corridors of power. The voice of the citizen is not heard in the corridors of power. How has this agreement been done in days? Minister is saying no. Try to show me another file in Pakistan where the minister says no, and not just because for wrong reasons, but he gives reasons. And the chief minister overrules him without even saying why he's doing that. Show me one file in the whole of government of Punjab. It's usually the other way around. That the chief minister may say no, the minister may want to do something, he is a check. Here the chief secretary looks the other way. The secretary bureaucracy is now completely subservient to whoever is the chief minister. वो हैं जी फाइल, लेकिन वो सारी इसी किस्म की हैं. I have this bad fortune of looking into things. वो सारी इसी किस्म की. पहले bureaucrat लिखता था कि no, this can't be done. अभी कुछ लिखते हैं. That is the job of the bureaucrat. अभी भी कुछ लिखते हैं. This is wrong. Ministers decide policy matters. Bureaucrats ensure the laws are complied with. But this we haven't seen in this. The bureaucrats were as eager. अब समरी आती है, ऊपर से हुक्म आता है ये समरी भेजो. मैं नहीं भेजता हूँ. I have a different experience, my lord. In the last 7, 8, 9 months, there are officers who are taking stand also. I have noticed it myself. I'm not saying that they aren't, but then those are officers who probably are not appreciated and are not given this kind of postings that they deserve. And those who are brown nosing, they get what they work in tandem. So these are grave issues of governance as well. My lord, they are. So we are always extremely reluctant in getting involved in governance issues, but we are just pointing out our concerns and expect you to be looking at them. My lord, I will. ठीक है? I will. तो अब हम किसी लगेगा आफ्टर इनकी ईद ना खराब करें, ईद के बाद आ जाएगा. हाँ, हो सकता है they get something before Eid. सर अगर इन्होंने ईदी दी तो ईद से पहले ही हमारी मीटिंग हो जाएगी. अच्छा नहीं, आप जब हैं तो अब हमें तसल्ली है, अब हो जाएगा. जी ठीक है. या कर ना, आप फिक्र ना करो. अरे इंशाल्लाह. चलिए, थैंक यू. Thank you. That it has been listed on different dates, and he gives the dates. I have also said it has